Welcome back to Chasing Trophies. Another day in the IPL, another win for RCB. I think that's 3 back-to-back wins. So they've lost one game only in the season so far. उनकी बैटिंग तो भाई जबरदस्त दिख रही, बॉलिंग भी जबरदस्त दिख रही. Josh Hazelwood is back, man. आज जो बॉलिंग करा उन्हें भुवनेश्वर कुमार, Rashid Salam, what a spell from him as well. The spinners, Krunal Pandya, I don't know क्या हो गया भाई उसको. He's playing better than his brother right now, and I'm sure he knows about it. But yeah, man, another poor performance from LSG. I know that they're playing against a tough team, but you want a bit of a fight ये situations में. जो LSG पहले करते थे बैंगलोर में, चिन्नस्वामी में बैंगलोर के खिलाफ चैलेंज करते थे, वो नहीं हो रहा. Faiz is joining me as well. Faiz, like I don't know, this is going to be a very short summary because it's two stories. One is an amazing team, one is a struggling team, and that's what it showed today as well on TV. भाई मैं तो पहली बार लाइफ में आंखा खोल के सोया ऐसा लग रहा था. That's how bad this match was from LSG's point of view. From RCB or seeing their defending champion mentality strong होते जा रही है उनकी. जैसा आप बोले whatever they're touching right now is becoming gold. Yeah. And let it be with the bat, let it be with the ball. Krunal Pandya भाई is the main differential factor right now. Middle overs में आके पूरा crumble कर दे रहा. ऑपोजिशन को प्रेशर में डाल के ना रन्स पड़ रहे, देन वो प्रेशर में आके उसको विकेट भी मिल जा रही. सो ही इज बीन सेंसेशनल. लखनऊ सुपर जायंट्स का कैंप में ही मतलब एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा. इट डजंट लुक फिट भी नहीं लग रहा है. मतलब मिचेल मार्श को हम देखे बाउंड्री पे भागते हुए. निकोलस पुरन हैज फंबल्ड सो मेनी थिंग्स. सो फिटनेस looks like a lot of, I mean not Markram maybe, but like Marsh I don't look fit. P doesn't look fit. ऋषभ पंत भी बेचारे आज पड़ गए हाथ पे उनके. So all over the place लग रहा है फिलहाल for Lucknow Super Giants. From RCB's perspective, by every game they are going more and more confident. Top 5 बैटिंग रहने दो, अभी तो टॉप बाकी के जो 6 प्लेयर्स वो भी जबरदस्त दिख रहे हैं. बॉलर्स रहने दो, एवरीथिंग मैन. आरसीबी इज लुकिंग टॉप फॉर्म राइट नाउ. या एंड लाइक यू नो जो भी उनके एक आध जो चेंजेस हुए ना, उन लोग दे डूइंग वेरी वेल. रजत पाटीदार की कप्तानी भाई जितना भी हम तारीफ करें कम है. ही इज डन रियली वेल. ही इज गॉट देम टू प्लेइंग लाइक अ टीम. अभी तो यूनिट है. अब विराट कोहली पे डिपेंडेंट नहीं है या एक बॉलर पे डिपेंडेंट नहीं है. पूरी टीम मतलब आप पे प्रेशर डाल रही है. लाइक यू नो सूर्यश ने, कृणाल पांड्या, वहां से हेजलवुड, भुवी, Shepherd. आप देखो 5 विकेट चले गए उनके बगैर. It felt like they won by 9 wickets, bro. That's how it felt, the way they batted. And LSG का you mentioned like throughout the day and everything, but उनका कप्तान भी इंजर्ड हो गया. ऋषभ पंत is injured. They have very good players, but nobody is performing like you said, similar to KKR. या भाई पावर प्ले बॉलिंग इतनी मतलब न्यू बॉल है, आप उसको क्यों पटक रहे हो भाई? लेट इट डू इट्स थिंग ना. लाइक आप एनफोर्स क्यों कर रहे हो कि वो हाइट पे आ रहा हो ना उठा दे रहे 38 सर्कल से आराम से लाइक डेड टचिंग एंड उस पे आप पेस भी डाल रहे हो. सो दैट अगेन डजंट मेक सेंस. जब आपके पास न्यू बॉल है, यूज व्हाटएवर जितना भी मॉइस्चर बचा है जो भी है, एटलीस्ट द शाइन ऑफ द न्यू बॉल जो बोलते हैं आप आरसीबी की बॉलिंग देखो. नो वन ट्राइड टू एनफोर्स एनी काइंड ऑफ बॉल. जस्ट लेट इट flow how naturally it can go. Bhuvi getting movement, Hazelwood getting like test ball length मारा था, driving length मारा था. आप लाके पुल वाले लेंथ दोगे तो भाई विराट कोहली बिल्कुल सही है. आप बॉल को स्विंग करने नहीं दे रहे हैं. आप यू नॉट मेकिंग द मोस्ट of aggressively at it and you're throwing, and Shami is not that kind of bowler who would do that, and that's ironic. And Prince Yadav, I think you can say is a little inexperienced, but other than that, like Avesh probably bowled the best out of the lot. Digvesh को भी आज पकड़ के मारे. You have Mohsin Mayank. Why didn't you use Mayank? छोड़ दो, Mohsin Khan को तो आप यूज कर सकते. I think उसका injury problem because 3 गेम से खेल रहा नहीं उन्हें. Again, I think it's become like that. लेकिन I heard that he's getting fit now. तो मगर I do agree like it looks a very tough. Yeah, it looks very tough now for Lucknow Super Giants. मेरे को ये like थोड़ी हंसी नहीं, मगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज क्या ट्रीटमेंट होने वाला है. अभी हमारा बेल्ट है, आज तो बेल्ट या तो बेच भी छड़ी है भाई. There's no, because I don't even blame him if he gets angry in the dressing room. Like not in the dressing room, Justin Langer, whoever it is, because there doesn't look like intent, right? Like अरे यार मार्स भी कील लेते मारा. I would say yes. In चिन्नस्वामी हम ये देखेंगे the wicket is changing a lot, and you know that you have to add pressure from the get go, and you didn't like. I understand ball के ऊपर post the power play थोड़ा maybe better हुआ होगा. But again, like this is not the first game हम ऐसा देख रहे हैं कि भाई there is a lackluster performance. SRH का भी गेम में इसलिए बोल रहा था कि भाई close आया 150 के चेस को भी they were looking like they might have given it away. हाँ, JD United से better कोई अगर bowler होता on that day, maybe differential हो जाता था. So they beaten a बेकार KKR with that Mukul Choudhary, brilliant. Don't get me wrong. And then they've beaten a SRH, which was like we got stuck because of the nature of the pitch in our own house. Yeah. So if they get that way, LSG lost to DC, they've lost to Gujarat. 160 से ज़्यादा मार रहे हैं हम लोग, 160 से ज़्यादा खा रहे हैं. Yeah, I think that they put it spot on over there.
yeah, I think from RCB's perspective, everything looks sorted right now. It's just on the day if they make mistakes and everything. Like the way they're batting, also they're taking those risks now. You can even see Virat Kohli taking those risks, and Patikal, they're all trying to hit. Obviously, they'll have a bad day like the Rajasthan Royals, but even on the bad day, if they're scoring 200, it is a solid team. I think they can make it to the playoffs from here. Even them and Punjab look like they can repeat what they did last year, but there's still a long way to go in the tournament. किस्मत बदल सकती एक मैच में last ball छक्का लग जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, you don't know. I think tomorrow's game is also very important from Mumbai Indians point of view. If they need to stay in it, and also if they want other people to stay in it, ये पंजाब को हराना जरूरी है, नहीं तो फिर वो ऊपर नीचे हो जा सकता है. But right now the likes of Punjab, RCB, even Rajasthan Royals, I know they had a very poor game against Hyderabad, but these teams are looking pretty good. Let's see how they continue in the next half of the season. But thank you, Faz. Thank you, everybody. And we will catch you guys today for the Punjab-Mumbai game. Take care, everybody. Bye-bye.